Hello everyone. I hope all of you can hear me. Let me know in the chat box, everybody. Okay, so let's start with the basic point that I'm going to discuss. So we are going to discuss what exactly should we do to find the conclusion in a passage. बहुत बार क्या होता है हम पैसेज पढ़ तो लेते हैं बट हमें मेन पॉइंट समझ ही नहीं आता एंड समटाइम्स उल्टा भी होता है हमें मेन पॉइंट समझ नहीं आता बट वी हैव द फील दैट वी हैव अंडरस्टूड द मेन पॉइंट सो वी थिंक वी हैव अंडरस्टूड बट वी हैव नॉट अंडरस्टूड एक्चुअली. So very clearly, when you miss the main point, then very clearly all the other questions which are related to the main point, they also go wrong. Correct? Now, how do we minimize the problem is what I'm going to discuss. Please remember, you will make mistakes. That's part of the game, but we can minimize the mistakes. Mistakes completely khatam kabhi nahi hote unless you become God. But tab tak we can manage with less number of mistakes. So accuracy should go up. That's what the whole idea is, correct? That's what we're going to discuss today. So let me quickly see. All right, I can see a lot of you have joined. Welcome everyone. I can see Navya, Nityank, Achal, Rupak, Tanya, Arvind, Movies Malik, Shrishti, Shubham, Harshita. Welcome everyone. बहुत बढ़िया. Good to see you all. Priyans Raj. I appreciate the fact that you guys take out time to join, right? क्योंकि आजकल time सबके पास limited है. So I have no intention to spend time on unnecessary things, and I do not want to waste anybody's time. Correct? तो हम जल्दी जल्दी से करेंगे short video. Now if you're watching me after the session is over, तो आप मुझे higher speed पे भी देख सकते हो. But make sure you watch the video till the very end. Correct? तो आप high speed पे देख सकते हो. Content same रहता है. Interaction of course यहाँ पे if you're watching me after the session is over तो कम रहता है. So you can watch me at a faster speed also. No problem at all. Okay? All right. तो Shreyans Oshin has also joined. Okay, good afternoon everyone. Good to see you all. और बहुत खुशी हुई सब से मिलके वर्चुअली मिलके. तो शुरू करते हैं. तो पहले थोड़ा सा मैं बता दूं what are we doing here at BYJU'S Exam Prep for you guys. So if you're still thinking, if you're one of those जो भी बैठ के सोच रहा है मैं क्या करूं कैसे करूं CLAT 2022 के लिए, तो पहले तो याद रखना टाइम ही नहीं है, जल्दी करो. और अगर सोच रहे हो क्या करना है तो ज़्यादा मत सोचो. वी ऑलरेडी हैव आवर क्रैश कोर्स नंबर 3 गोइंग ऑन, वो ज्वाइन कर लो. बेस्ट ऑफ द फैकल्टी वुड टीच यू. यू वुड गेट डे बाय स्टडी प्लान, वीकली परफॉर्मेंस टेस्ट, doubt sessions and motivation sessions and counseling and whatnot. Some of the faculty members that we have are from NLUs, so they would share their experiences, they would share their strategies. So जबरदस्त कोर्स है, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना है ना. Just come and join. If you're looking for CLAT 23 batch, remember CLAT 23 is going to happen this year, so you do not have that kind of time. About 8 months left, 8-9 months, 8 months actually. तो इसके लिए भी हमने क्लासेस बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हुए. आप बैच 2 ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कोर्स का. यू कैन कम फॉर फ्री ट्रायल क्लासेस ऑल्सो. यू वुड गेट अगेन द सेम वर्ल्ड क्लास फीचर्स. मतलब विल इंश्योर दैट यू स्टडी अ लॉट, राइट. और मतलब बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा वेट मत करो. कम एंड ज्वाइन. Okay, let me see if anybody else has also joined. All right, I can see Bhumi now. Ocean is there. Yes. Okay, तो शुरू करते हैं. Will not spend unnecessary time on anything because अब हमारे पास टाइम बहुत कम सा बच गया है ना. Now the first slide that I'm showing you, this we have discussed in my various classes. मैंने पहले भी YouTube sessions में ये वाला पॉइंट बताया हुआ है. I'll repeat because it's very crucial. बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ज़्यादा ध्यान से सुनना. Okay. So when you are reading a CR passage, critical reasoning passage, logical reasoning passage, जब भी आप पढ़ते हो, the first thing you have to keep in mind is that there should be 3 fundamental points in your head when you read a passage. कोई भी passage पढ़ते हो 3 पॉइंट दिमाग में होना चाहिए without any doubts. First is that what is the subject matter? ऑथर किसके बारे में लिख रहा है. करेक्ट. बहुत सारे स्टूडेंट पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि ऑथर किसके बारे में लिख रहा है. Sometimes students pay attention to a tiny part of the paragraph. सर वहाँ पे उसने न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में बात किया, so passage must be about nuclear treaty, whereas the passage may be about uranium or plutonium. Correct.
So you have to first figure out what is the subject matter of the entire passage. Second thing is, what is the way the author is dealing with the subject matter. For example, is the author explaining it? Is the author taking a side? Is the author arguing? Is the author explaining? Is the author describing? Is the author being sarcastic? Is the author making fun? Is the author being funny? Is the author being non-serious? Is the author investigating? Is the author analyzing? यू हैव टू पे अटेंशन, ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऑथर कर क्या रहा है पैराग्राफ के अंदर, कैसे सब्जेक्ट मैटर के साथ वो डील कर रहा है. दिस कैन हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन ऑन टोन ऑल्सो. एंड लास्टली यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाई डिड द ऑथर राइट ऑल दिस? इतना सारा लिखा क्यों? व्हिच आई ऑल्सो, एंड आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी नो, थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज कहना क्या चाहते हो पॉइंट. इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा, कहना क्या चाहते हो, क्यों लिखा? कुछ और कर लेते जिंदगी के साथ. करेक्ट. मूवीज देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे, और आप जाके रील्स देख लेते हैं, पर आपने पैराग्राफ लिखा है तो कोई तो रीजन होगा, है ना? इट्स अ पेनफुल टास्क. सो व्हाई डिड यू राइट दिस पैराग्राफ? व्हाट इज द ऑथर्स मेन पॉइंट बिहाइंड राइटिंग द पैराग्राफ? और यहाँ पे मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं. ओके, दे अगेन पे अटेंशन टू नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. तो पार्ट में अगर लिखा है बर्ड्स के बारे में, पैराग्राफ बर्ड्स के बारे में है, और क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द ऑथर, और स्टूडेंट्स टिक लगा देते हैं बर्ड्स. बर्ड्स आर नॉट द कंक्लूजन, बर्ड्स आर द सब्जेक्ट मैटर. हो सकता है ऑथर बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में बताना चाहता है कुछ, हो सकता है ऑथर बर्ड्स के नंबर्स के बारे में बताना चाहता है, हो सकता है ऑथर इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहता है. सब्जेक्ट मैटर इज नॉट बर्ड्स, द कंक्लूजन इज नॉट बर्ड्स, सब्जेक्ट मैटर इज बर्ड्स. यू हैव टू कीप दीज 3 पॉइंट्स इन माइंड. सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया हुआ है बहुत बार, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए. करेक्ट. नाउ elimination basically means what? I'm not going after the perfect answers, I'm going after whatever is left after elimination, जो बच जाए elimination के बाद वो. Correct. So it's like selecting what to eat for lunch. तो घर में पूछा कि लंच में क्या खा सकते हैं, तो घर वालों ने बोला कि देखो नॉनवेज बना नहीं है, वेज में आज दाल है, चावल है और गोभी की सब्जी है, अब बताओ क्या खाना चाहते हो. तो ऑप्शन ही नहीं एलिमिनेट करने को, चॉइस ही नहीं हमारे पास, वही खाना पड़ेगा. हाँ, यू ऑल हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन गो एम्प्टी स्टमक, मत खाओ, या फिर बहुत सारी और चीज़ें भी घर वाले खिला सकते हैं. तो हम एलिमिनेट करते हैं, हम सोचते छोड़ यार, घर वाले कैन गेट एंग्री, पिटाई विटाई करते हैं, छोड़ो ये ऑप्शन हटाओ, खाली पेट रहना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो खा लेते हैं. वी आर नॉट सेलेक्टिंग परफेक्ट चॉइस. परफेक्ट चॉइस तो शायद रेस्टोरेंट में जाके खाना है, वो मिलने वाला नहीं है. तो क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शंस घर पे ही खा लेते हैं, टिंडा तोड़ी वटेवर. तो एक्सट्रीम वर्ड्स का ध्यान रखना होता है, आपको पता है. डिग्रीज का ध्यान रखना होता है, वर्ड्स की डिग्री बहुत मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टेटमेंट सेज द एनिमी सोल्जर्स किल्ड 50 civilians, like Russian soldiers killed 50 civilians versus Russian soldiers slaughtered 50 civilians versus Russian armed forces executed 50 civilians. तीनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है. Pay attention to that. When you say executed, intention is there. Slaughter is like brutal, but killing can be collateral damage also. For example, मिसाइल हिट किया और लोगों की डेथ हो गई, डेथ वो भी है, बट इंटेंसिटी में डिफरेंस है, इंटेंशन में डिफरेंस है. यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स, राइट? So you have to pay attention to these things. For example, you cannot choose any option which is too broad, too generic, too specific, or you cannot choose too vague. You cannot choose something which has wrong info or extra facts. You have to also pay attention to the type of question asked. If the question is inference, you should know what is an inference. Correct? तो ये सारी बातें मैंने की भी है पहले भी, मैंने रिपीट कर दिया. तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रख के कंक्लूजन निकालना आना चाहिए. बट दिस इज ईजियर सेड देन डन. बोलना आसान है, करते वक्त गाड़ी अटक जाती है ना. बट आई हैव ब्रॉट अ वेरी स्मॉल क्यूट पैसेज. प्लीज रीड द पैसेज क्विकली. और क्वेश्चन तैयार है, देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है. पैराग्राफ पढ़ो, मेन आइडिया है, टिक लगा दो, हो गया आंसर. दैट्स इट. कैन आई प्लीज हैव द आंसर एवरीवन? जल्दी से रीड करना, ज़्यादा टाइम मत लेना, एंड जल्दी से आंसर बता देना. ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर है. जल्दी से एवरीवन. ओके, मीनवाइल आई विल सी द चैट ऑल्सो, और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर भी करूंगा. ठीक है एवरीवन? If you have asked any question in the chat, I will answer it. Don't worry.
but meanwhile you read the paragraph. Okay. Navya होगी 25 to 30 minutes max. 25 is the ideal time. Okay. आयुष श्रीवास्तव, टाइम तो इतना ही है हमारे पास, करना तो पड़ेगा, गेम इज दैट ओनली, है ना। हम टाइम बढ़ा नहीं सकते, we'll have to manage the time within those 5 to 6 minutes per passage. इसी में करना है, that's the game. okay. डे नाइट मून, अब मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? डे नाइट मून, गुड आफ्टरनून। सृष्टि कटारिया, गुड आफ्टरनून। जस्ट रीड द पैसेज गाइज एंड आंसर द क्वेश्चन क्विकली। आसान सा है, कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं है। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके। ओके, चलो आंसर्स आने लग गए, बहुत बढ़िया। शुभम दिवाकर सेज AACC, आई थिंक यू मीन सी। हाँ, सृष्टि का आंसर सी है, उजैफा का सी, भव्या का सी। ओके, बट आई विल वेट एंड देन विल सी। भव्या सी, नव्या का भी आंसर सी है। क्या बात, लगता है पूरा का पूरा बैच इसे गलत करने वाला है या सही करने वाला, आई डोंट नो। सृष्टि का आंसर भी सी है, बहुत बढ़िया। टुडे वी हैव अ सेशन एट 3:30 आल्सो एवरीवन, ऐप पे 3:30, फ्री हो तो आ जाना। मयूर सी, हर्षिता सी। क्या बात। नाउ हरप्रीत का आंसर है ए। विल सी द आंसर लेटर। ओके, आंसर देखते हैं बाद में, बट मैं छोटी सी एक चीज बता देता हूँ, डिस्कस करते हैं। इफ यू हैव बीन डूइंग माय सेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू ऑलरेडी नो दीस थिंग्स, बट मैं फिर बता रहा हूँ। Whenever you read a paragraph, you know what are the main points you have to keep in mind, correct? पहला सवाल पूछेंगे what is it about, सेकंड पूछेंगे स्टाइल क्या है, एंड थर्ड पूछेंगे कहना क्या चाहता है, कंक्लूजन, है ना। Because we are likely to get questions from these three areas a lot. If now listen to me very carefully, guys. If I get a strengthen, weaken, assumption question, it will depend on the conclusion only. If I get a main conclusion question, obviously it's a direct question. तो चार क्वेश्चन तो सीधा कंक्लूजन बेस्ड होते हैं। If I get the conclusion right, I get the assumption correct, I get the strengthen correct, I get the weaken correct. If I get a tone question, style will help me. And if I get any true, false, etc. kind of question, what will help me? What is the paragraph about? What is it saying? What is it not saying? Right? Okay. Now, if I start the paragraph, it basically talks about a world, small insulated world that maintains constant temperature. Correct? And then this is the what part. What is it about? It's about a world that is below the snow cover. So मिट्टी है, फिर स्नो है, उसके बीच में एक दुनिया है, एक दुनिया बसी है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, मतलब थोड़ा बहुत दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता। राइट? The paragraph is about that. Subnivium is the name. What is the author's style? The author's style is very clearly, the author is describing it. The author is, I can say it's descriptive, or we can say the author is describing it, author is explaining it. Not questioning, not arguing, not analyzing, simply describing, explaining. And कहना क्या चाहता है?
तो ऑथर कहना ये चाहता है that there is a world below the snow which is known as subniveum. It actually helps a lot of type of animals, even plants, and it is getting impacted by climate change, or it can get impacted by climate change. Correct. Now look at option C. A secret world is found just beneath the winter snow, and it can be affected by climate change. Exactly the point that we were discussing. But if I look at A, some of you have marked A. Ecologists have recently become interested in studying the subniveum and have come up with a variety of creative approaches. What happened to the second part of the paragraph? Second paragraph to gaya. Second part, climate change ka impact वगैरह. Second, is the paragraph's main point is that the ecologists have recently found it and they're using creative approaches. We don't even have facts to justify that. A to hoga nahi. The correct answer must be C for Calcutta. And let me tell you guys, the length of this paragraph is what you get in CLAT. The level of the paragraph last 2 years के हिसाब से बिल्कुल same है. And if you're getting it right, you should be happy. Correct everybody? तो अगर आपने what style and why is the author writing it, ये तीन चीजों पर ध्यान दे दिया ना, बहुत आसान है questions. बिल्कुल कर सकते हो. Do not worry. It can be done within 5 minutes. Now you have read the paragraph. I want you to answer the question quickly. जल्दी से पढ़ के बताओ आंसर क्या होगा everybody. Navya Rastogi, is it clear now? I just saw your comment. Clear? Okay. क्विकली एवरीबॉडी. क्वेश्चन तुमने पढ़ ही रखा है, पैराग्राफ तो पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कर दो, है ना. कितना आसान क्वेश्चन देखो. लेट्स सी. CCA, CCC, A एंड C. अब ये दो आंसर कैसे होगा शुभम दिवाकर? या तो A होगा या C होगा. देयर आर नो ऑप्शंस फॉर A एंड C बोथ. नो. ओके. अच्छा, सृष्टि का B है. ओके ओके. ACB. चलो बढ़िया. कोई D भी लगा दो तो फीलिंग थोड़ी अच्छी आ जाएगी नहीं? हाँ देखा, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस. वोप्सी क्रिएशन सेज डी इज द करेक्ट आंसर. ABCD सारे ऑप्शन मार्क हो गए, कोई नहीं बचा. बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है. शशांक कुमार का आंसर है ए. नव्या का आंसर इज सी. ऑल राइट, आई विल हेल्प यू विद द आंसर. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन सेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फर्ड? Inference is a conclusion that is not written. Inference is a guess based on evidence. इन्फ्रेंस को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस तो होता है, लेकिन इन्फ्रेंस लिखा नहीं होता पैराग्राफ में. करेक्ट. तो अब शुरू करते ए से. एज कंपेयर टू अदर हैबिटेट्स, एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल व्हेन देयर इज हेवी स्नोफॉल. जिन्होंने ये मार्क किया है वो मुझे बताएंगे ये कंफर्टेबल वाली बात कैसे पता चली. हेवी स्नोफॉल जब होता है तो बाकी हैबिटेट के मुकाबले एनिमल ज़्यादा फील करते हैं, स्नोफॉल में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. कहने का मतलब समझ लो. ए ऑप्शन का मतलब समझो. देखो कितना गलत आंसर मार्क किया है. ऑप्शन ए के हिसाब से जब ज़्यादा बर्फ गिरती है ना तो एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं. सोचो, यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स इन अदर हैबिटेट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कैमल इन डेजर्ट. अरेबिया में कैमल है, वो बर्फ गिरेगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा. या एक वेल है जो पानी के अंदर तैर रही है, ज़्यादा फील करेगी कंफर्टेबल अगर बर्फ गिरेगा तो. करेक्ट. ऑप्शन ए कहता है कंपेयर टू अदर हैबिटेट्स, एनिमल तब ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब बर्फ गिरती है. सारे एनिमल करते हैं.
एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिखा। कंपेयर टू अदर हैबिटेट्स, अदर का मतलब सारे हैबिटेट्स, एनिमल्स का मतलब सारे एनिमल्स, एक्सट्रीम वर्ड्स, ऐसे भी आउट हो जाएगा। बी में देखो, द टाइनिएस्ट टू द लार्जेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द फ्रोजन सरफेस फॉर देयर फूड। हे भगवान, एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिखा। टाइनिएस्ट से लेकर लार्जेस्ट फॉर्म जो है वो फ्रोजन सरफेस पर डिपेंड करता है फूड के लिए। कैमल जो है वो फ्रोजन सरफेस से खाना खाता है लेके। रॉयल बंगाल टाइगर बर्फ पे दौड़ते हुए देखा है कभी? सुमेरियन टाइगर्स दौड़ते हैं, बट रॉयल बंगाल नहीं दौड़ता, है ना। ए और बी तो बहुत ही महाबकवास ऑप्शन है, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। डी पे चलते हैं, किसी ने डी भी लगा दिया, वोप्सी क्रिएशन ने डी मार्क कर दिया। डी, टेम्परेचर इन द सबनीवियम इज मच हायर than the surface and doesn't allow organism to survive। मैंने पहले ही कहा था इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, डी बिल्कुल ही गलत है। पूरा पैराग्राफ ही कह रहा है सबनीवियम के अंदर लाइफ रहती है, ये कहता है अलाउ ही नहीं करता। तो आंसर क्या बचा? सी। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यू मस्ट हैव थॉट द पैराग्राफ इज वेरी इजी, है ना, ये तो सब कर लेंगे, बट कैन यू सी सबसे नहीं हो रहा, पीपल आर गेटिंग इट रॉन्ग। आउट ऑफ 20 people attempting, if 5 are going wrong, the paragraph is doing its job, you can't call it easy, है ना। पैराग्राफ से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। ओके, पैराग्राफ तुमने पढ़ रखा है, अगला क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से एवरीबॉडी। ओके, नव्या, you know the answer, right? There is no such rule, but it is likely to be so। कोई, याद रखना, आप जब रीडिंग करते हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान याद रखना है कि आप एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, आपको गलती के चांसेस होते हैं, करेक्ट। दैट इज वाई वी से एक्सट्रीम वर्ड से बच के रहना। बट एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब हमेशा गलत आंसर्स होंगे? आई कांट से दैट, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टाइप, लैंग्वेज, ऑप्शंस, एवरीथिंग, पैराग्राफ। ओके, अनिमेश काफी लेट हो गए, जल्दी से एवरीवन, बहुत ही आसान है। यही बहुत लड्डू क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डी आ गया आंसर, बी आ गया आंसर, सृष्टि का डी, मयूर का बी, शुभम का बी, हर्षिता का बी, नित्यांक वोप्सी, आंचल का बी। बट सृष्टि ने डी से शुरू किया था, किसी ने डी नहीं बोला अभी तक। ओके, सृष्टि ने भी चेंज कर लिया आंसर, ठीक है। रूपक बी, ओके। सृष्टि मौर्य का आंसर डी है, ओके। लेट्स चेक, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Which of the following is best supported by the later part of the paragraph? Later part of the paragraph means I think second half को we can call later part, है ना। What is the question asking? 4 options are given. Tell which option is likely to be true based on this part, है ना। वेरी सिंपल, तो इस पार्ट को पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे किसको सपोर्ट कर सकता है, करेक्ट। तो डी से शुरू करते हैं। Some plants and animal species are dependent on the layers of snow for their survival। ये तो लगता है मुझे सही है, करेक्ट। So let me ask everyone, why should I not mark D? Because D actually can be supported by the information, no, that some plants and animal species are dependent। अगर मैंने तुम्हें लिखा है for some of the tiniest forms of life and a mild winter temperature in which they can survive compared to the killing cold up above। So for some of the tiniest forms of life, this is required. Layer of snow for them is required. The active fungi releases important nutrients to plants. As the temperature warms, the snow slowly melts and provides water for spring flowers। तो डी आंसर क्यों नहीं हो सकता? Some plants and animal species depend on the layers of snow for their survival। तो क्लियरली मेंशन्ड है डी में, तो डी क्यों नहीं आंसर है भाई? सब बी लगाए जा रहे हो। आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट टेल मी बी क्यों, डी क्यों नहीं लगाया, वाई बी, जल्दी से।
अब सब सोचने पड़ गए, अरे हाँ डी भी तो सही है। ओके, मयूर जायसवाल, दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ओके, तो इसका आंसर याद रखना, आपको हमेशा क्या आंसर करना है, यू हैव टू टेल मी दैट सर द क्वेश्चन सेज बेस्ट। नाउ रिमेंबर गाइस, व्हेन यू से द आंसर इज डी, you are not saying, you are saying answer is B, you are not saying that D is not supported, we are not saying that, we are saying D may be supported, but there is another option which is even better. For example, read B. It says climate change will have important consequences for species that need the subniveum to survive. Now everybody pay very close attention, read these last few words, species that need the subniveum to survive. What does it mean? It means there are some species who need the subniveum to survive. That is what option D is saying, yes or no? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऑप्शन डी में जो लिखा है वो तो बी में लिखा है एक्चुअली, इस लाइन का मतलब तो यही है, मीन्स डी इज ऑलरेडी कवर्ड एंड बी ऑल्सो हैज समथिंग मोर, therefore B is a better answer. This is something you have to learn to eliminate options better. The correct answer is therefore B. Is it clear everybody? Did you understand how examiner expects you to think? कैसे eliminate करना है? Correct? आंचल शर्मा, that's correct. शुभम दिवाकर, नो ऐसा नहीं है, बट आई होप अब क्लियर हो गया होगा, है ना? डी ऑलरेडी बी के अंदर मेंशन्ड है, दैट वाज द फन पार्ट। ऑल राइट, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनारसी लड्डू। That's good, Movies Malik. Navya, option D actually talked about subniveum also, but did not use the word. Okay. चलो आंसर आने लग गए, सी, बहुत बढ़िया। तान्या सेज बी, सृष्टि मौर्य सेज ए। अब मजा आ रहा है, ए बी सी तीन ऑप्शंस हो गए, अब बस कोई डी बोल दे, लाइफ सेट। अर्शिता बी, अब कोई ना कोई तो डी बोलेगा पक्का। आंचल बी, ओके, लेट्स सी। रूपक बी, शशांक ए, वपसी बी, कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। चलो, यानी मैं समझ गया, लड़ाई ए बी और ए बी और सी के बीच में चल रही है। नित्यांक ने सैक्रिफाइस किया और वो कह रहा है मैं तो डी पे मार्क कर देता हूं, क्योंकि किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना? चलो, अब वोप्सी क्रिएशन का क्वेश्चन देखो कितना रेलेवेंट है क्लैट के लिए। चलो, अब मैं पहले बता देता हूँ आंसर क्या है इसका, ओके, फिर बताऊंगा क्यों है जल्दी से। तो करेक्ट आंसर बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। पैराग्राफ कितना भी आसान हो, क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं, बात समझ आ रही है? अब क्यों है ऐसा, एलिमिनेशन पे ध्यान देते हैं। लेट्स एलिमिनेट गाइस। Question says in the passage, the author seems to imply. Imply means the answer is unlikely to be written. Imply का मतलब है कि author कहना तो चाहता है बट लिखा नहीं होगा शायद उसने।
means your answer is unlikely to be written anywhere. Do not try to find it. Okay, now let's go to options. Option 1 says winter ecologists do not know much about the subniveum because it lies beneath the snow. क्या बकवास है? It describes you so much. These guys are studying it. पूरा का पूरा ज्ञान लिखा है यहाँ पे सबनिवियम के बारे में. So author is trying to tell you that the scientists do not know about it. What bakwas? Option A is out. Definitely out. Now let's go to option D. Because of historical reasons. Any information to support this? Any information to say that the author is saying this? Historical reasons रहे हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने विंटर इन्वायरमेंट में सबनिवियम को स्टडी नहीं करा. पूरा पढ़ लो. Nothing is given, correct? Now look at option C. The best time to see the subniveum is when the snow has nearly melted. The best time to see the subniveum is when the snow has nearly melted. According to a lot of you, this is what the author is trying to tell you in the passage. How do we know? Let's find out. Any line, anything, or any information about that? At the best time to see the subniveum. In fact, if you look at the information, they are talking about tiniest possible things. Some of the tiniest forms of life. Soil bacteria. Do you think the author is trying to tell you that you can see bacteria when the snow has melted? Best time है snow melt होते जाके bacteria देखो. Bacteria दिखेंगे. Correct. I'll tell you why you did not consider B option at all. तुमने B option को ध्यान से पढ़ा ही नहीं because तुम्हें एक word दिख गया जो तुमने सोचा यार ये तो पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं मैंने कहीं पे. In fact, you did not even analyze option B properly. I'll tell you and let's analyze it. Option B क्या कह रहा है देखो. In contrast to what has been understood for many years, in contrast means unlikely, contradictory to, the winter environment is far from dormant. क्या मतलब इसका? ऑथर कह रहा है कि बहुत सालों तक या जो आज तक लोग सोचते आए हैं कि विंटर में कुछ होता ही नहीं, सब कुछ जम जाता है, खत्म. सच्चाई ये है कि विंटर टाइम में बहुत कुछ होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां से पढ़ना शुरू करो आपको समझ में आ जाएगा. पढ़ो यहां से. दिस माइक्रो हैबिटेट टर्न्स ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट स्नो ऑन इट्स हेड. इस लाइन का मतलब समझे दया? क्या मतलब इसका? अभी तक लोग ये मानते आ रहे थे कि स्नो के टाइम में कुछ होता ही नहीं है, बट माइक्रो हैबिटेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे ये सोच जो है ना बिल्कुल उल्टी हो गई है. यानी क्या? अभी तक सोचते थे कि ठंड में कुछ होता ही नहीं है और ये सोच हो गई है उल्टी. यानी thanks to the emerging field of winter ecology, we now know that snowy environment have lives of their own. Lives of their own means what? They are not dormant. Dormant means sleepy. No life whatsoever. Now we know it is not the case. So in contrast to what we have thought so far, winter environment is actually alive. It is not dormant. इसी बात को उल्टा करके लिख दिया और हमने इग्नोर मार दिया. मुझे लगा बी आंसर होएगा ही नहीं, कहीं मेंशन ही नहीं है. करेक्ट आंसर इज देयर फॉर बी. सो बिफोर आई लेट यू गो, डिड यू अंडरस्टैंड इट एवरीबडी? बहुत लोगों का 4 आउट ऑफ 4 होने वाला था बट हो गया 3 आउट ऑफ 4 एंड दैट इज ऑल दैट इट टेक्स टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट गोइंग टू अ गुड कॉलेज. एक क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू इन द क्लासेस. Last year 0.25 marks would have been the difference between two students, or rather 0.25 would have led to a difference of 120 ranks between two students. उसमें एक क्वेश्चन गलत करना is end of the story. Correct everyone? So I hope you understood it. I'll see you again. Thank you so much for joining me here. I'll see you again tomorrow. I'll see you at 3:30 on the app. 3:30 app time is the free session on app. Okay, if you have not downloaded the app, you do not know where it is, just find out app store से download करो and start running classes. If you think that our content is good, we are helping you, please do press the like button.
बिकॉज दैट हेल्प्स अस रीच मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, ज्ञान की बारिश वहीं से शुरू होती है। I'll see you again, guys. Thank you so much for joining, everyone. Please take care. Bye bye, everybody. Thank you.